Yeah, Madhuri ji, uh, can you just let us know which one is the better? Yeah, बताइए ना. Welcome all. This is having the more participants. We'll start exactly by 9:09. Hi, Sunanda ji. Hi. Hello, sir. How are you? Good, good, good. Everyone has like a flower palette or something. I guess I'm the only one with like a single flower. Look at Vijay Thali. She has so many nice no flowers. problem. मैं सोचा जो भी सर बताएंगे या मैम बताएंगे तो उसके हिसाब से रख लेंगे। वायलेट बताया था ना उन्होंने। रेड कलर लेना चाहिए। उन्होंने आपने वायलेट भी लिखा था ना कि इसमें वायलेट प्रेफरेबली वायलेट होगा, तो इसलिए मैंने ये अपराजिता कल रखा है इसमें। मैम सब लोग को एक एक दे दो। ले लो सब ले लो सब लोग। और भी है मेरे पास, और भी रखे हुए हैं। अरे वाह। Lots of flower I have. got this small one somehow in my backyard. अरे it's okay यार, every Like this is the only one. ओ वो तो ऐसे ही हमें, मैं आज वॉक करने गई थी तो दिख गया, साथ में वायलेट कलर उन्होंने बोला तो वायलेट ले आई मैं, अदरवाइज तो रोज एंड ये तो होता ही है। वेरी गुड। I have no flowers. By the time I got the message, we had curfew, so the only option was go downstairs in dark. I have no flowers. Huh? Oh, that's okay. That's okay. I have no flowers. Aparna, It's I'm calling raining you very for a minute. heavily. Aparna, I'm calling you. Just pick up my call now. One second. मैम घर पे आर्टिफिशियल फ्लावर है तो वो ले लो। Yeah, Madhuri ji, are you there?
Can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah. Okay, let's start. Can you hear me? Can you hear? Yes, we can hear you. We can hear you. Okay. 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 So, Madhuri ji, can you switch on your camera, please? 1 second. Yes, please. 1 minute. Ganesh, Yeah, Imani. we have to take one flower and a coin, right? Yeah. And anything else? Just 1 crore you have to put in the account. That's it. What we have to put? Yeah. I heard 10 crores or 1 Oh, crore. no problem. I just want 1 crore. That's it. Okay, Madhuri ji. Okay, we don't have to take a plate or something like that, no? Sorry, Himani ji. Plate or something. Plate or water, something else. No. Yeah. गणेश जी इमेजिन करो जैसे हम लोगों को इमेजिन करवाते हो 1 करोड़ आ रहे हैं आपके पास में अरे वाह, इमेजिन करो हमारे को भी तो एनर्जी पुल में करवाते हो मनी इज कमिंग डॉलर इज कमिंग और थैंक यू तो आज मैं ये इमेजिन करता हूँ तुम लोग का अकाउंट से सबका अकाउंट से देखिए 1 करोड़ आ रहा है बिल्कुल नहीं अगर वो तो पहले तो हमारे पास ही आएगा ना तब भी हम आपको देंगे ना थैंक यू मैम तो फिर हम 1 करोड़ नहीं हम 10 करोड़ लेंगे तो हम गणेश को 1 करोड़ पास ऑन कर देंगे ना हाँ तो उसी में आपका अकाउंट मेरा अकाउंट ही है आपका अकाउंट मेरा अकाउंट एक ही तो है ना बिल्कुल नहीं सर अकाउंट एक ही नहीं हो सकता Okay. आपका आवाज नहीं आ रहा है. Okay. 997. Madhuri ji, can you unmute yourself, please? आप अनम्यूट कर लो या. Yeah. 1 minute, I'm muting everyone. Then उसके बाद वापस आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. Yeah, Madhuri ji, just unmute yourself. Yeah. Okay. It's recording. Welcome to the session of 21 days magic with chakras. Today we have Madhuri from Mumbai. Okay, Madhuri is again in Reiki master, multiple other, she's again master in multiple modalities. So today's chakra healing will be aired by Madhuri ji. And of course, I know her personally, everyone. And her predictions, her healings are really pretty good. Okay, she's also healed for me and it has worked very well. Thank you, Madhuri ji. Okay, Madhuri ji, you have to unmute. You have to unmute. Yeah. So Madhuri ji, it's up to you. You can take this thing and start off. Okay, I believe that we all are energies. भगवान ने हमको एनर्जी बना के ही भेजा है, but we think that we don't know anything. इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, and we block ourselves because of that. So हमारी एनर्जीज को अनब्लॉक करने के लिए और प्रोग्राम करने के लिए today we are going to manifest and remove the blockages through simple technique. We'll take a flower and a coin. So फ्लावर से हम लोग हमारे सारे ब्लॉकेजेस और अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स निकालेंगे एंड विद द कॉइन विल प्रोग्राम पैसा सभी को चाहिए सो वी आर गोइंग टू डू इट मेनली फॉर मनी मैनिफेस्टेशन एंड वी हैव 7 चक्रास इन आवर बॉडी व्हिच आर आवर एनर्जी सेंटर. तो ये एनर्जी सेंटर को हम लोग पहले तो क्लेंस करेंगे, क्लीन करेंगे एंड देन विल प्रोग्राम इट. So first I request you all to take a flower. Flower क्यों? Can anyone answer why flower? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है. प्लीज कम ऑन द रेंज. Okay. अभी आ रही है? Yes, अभी आ रही है. Yes. ओके तो हम लोग फ्लावर ही क्यों ले रहे हैं? कैन एनीवन आंसर दैट? Because every chakra is related to flower.
Madhuri ma'am? Ma'am, your voice. चक्रा में फ्लावर पैटर्न की तरह होते हैं मैम. Okay. आई थिंक. हाँ, फ्लावर का जो कलर है वो स्काई को रिप्रेजेंट करता है और स्मेल जो है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. तो जो भी मैनिफेस्टेशन हम करते हैं वो स्काई और अर्थ के थ्रू करते हैं. इसलिए वी आर गोइंग टू फर्स्ट गो फ्रॉम अर्थ टू स्काई रिमूव करने के लिए, और फिर बाद में मैनिफेस्ट करने के लिए फ्रॉम स्काई टू अर्थ. यानी रूट चक्र से हम लोग क्राउन चक्र पे जाएंगे और क्राउन चक्र से फिर रूट चक्र तक मैनिफेस्ट करेंगे, एंड देन विल प्रोग्राम on our third eye. Are you all ready? Yes, we are all ready. But only request is everyone, a lot of people are there and ask for English, so you can continue in English, ma'am. Okay. Okay. No issues. Thanks, Madhuri ma'am. Thank you. So, we'll first take the flower and we'll keep it. First, we'll breathe in 3 times and command our body relax while we are exhaling. Okay? Breathe in. Relax. Breathe in. Relax. Breathe in. Relax. Now we'll keep this flower on our root chakra. We will just ask the flower to remove all the blockages from this life or past life. Whatever the blockages, whatever our negative thought patterns are there, and we'll ask the negative patterns, negativity to come on the flower. जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब इस फ्लावर पर ट्रांसफर हो जाए. Now we'll keep this on our root chakra, sorry, sacral chakra, and we'll ask the flower to absorb all the negativities, all the wrong thought process, wrong programming, whether of this life or the past life, and ask the flower to take and absorb all the negativities. We'll now keep this on our solar plexus. Solar plexus पे रखकर we'll ask the flower to absorb all the negativities, all the blockages, all the wrong thought patterns, belief system to get transferred on this flower. Now keep this flower on your heart chakra. मेरे इस जन्म के या किसी भी पिछले जन्म के जो भी नेगेटिव पैटर्न्स, थॉट प्रोसेस, बैड कर्मास एंड बिलीफ सिस्टम or negativities, whatever it is, just absorb it and take it away. You can just visualize that your heart center is getting cleared from all the obstacles, all the negative thought process, all the negativities, and it is getting cleansed. Now keep the flower on your throat chakra. Whatever wrong thought processes, karmas, bad sanskar or wrong patterns, मेरे कोई भी words वगैरह जो clear नहीं है और it has hurt anyone is being removed from by this flower and absorbed it. Just feel the negativity is being removed. Now keep this flower on your third eye chakra. Just ask the flower to absorb all the negative patterns, all the karmas, all the thought processes which are blocking us from getting creative ideas, creativity and thought process. So just ask it to remove those processes from this life or past life.
Now keep the flower on your crown chakra to remove जो भी wrong thought patterns, wrong beliefs, wrong programming, wrong संस्कार जो भी हुए हैं वो सब ये absorb कर ले और remove कर दें. You can just touch this flower to your whole body and throw it, because we now no more need this negativity. Okay, now we are going to program with the coin. कोई भी coin आप ले लीजिए. Now we'll go from crown chakra to root chakra. Crown chakra से हम लोग visualize करते हैं. We can visualize from our crown chakra. Then our ideas come to our third eye. Root chakra से we communicate with our throat chakra, and heart chakra creates the desire within us, and we can do our work. Social circle हमारे solar chakra से बनता है, and sacral chakra implements it, and at last the root chakra completes the task. So now we will make our coin lucky coin. Take 3 deep breaths again. Relax. 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 Now visualize a golden light coming on your crown chakra. This golden light is light of abundance consciousness, infinite prosperity, and total peace, health, abundance of health, and abundance of everything. Keep this coin on your crown chakra. Now you can visualize this crown chakra coin is opening up your crown chakra and opening the doors of money manifestation for you, of abundance consciousness, abundance prosperity, infinite prosperity, and it is opening the door for all the ideas, new desires, financial freedom, money manifestation, and it is opening all the crossroads for you and giving you a new direction for money manifestation. And you are getting new thoughts, new desires, new ways to do your work. Okay, now we'll keep this coin on our third eye chakra. I am opening up all the doors for money manifestation with the help of my third eye chakra. Third eye chakra say I am getting new ideas, new visualization, creativity, and I am getting new people, new ways to invest my money right way. I am investing money in my right way, and I am getting my new work done with the money manifestation programming. Now keep the coin on your throat chakra. I am opening up my throat chakra through this coin, with the help of this coin, and I'm programming it to earn money with new ways. My throat chakra is getting open,
and I am able to speak without any fear, without any blockages, without any मैं अपने words में अपने thoughts को अच्छे से clearly I can represent all my views creatively in front of anyone, and with my word I can convince anyone with my throat chakra, and I am getting all my work done easily without any fear, without any blockages, without any all my blockages are over, and now I'm finding new ways to communicate with people, and new things are being done. Now keep this coin on your heart chakra. I'm opening my doors for prosperity and money manifestation with the help of this coin, and programming this coin to open up my emotional blockages, I'm creating new desires. मुझे काम करने के लिए, अपने काम करने के लिए बहुत ही आनंद आ रहा है. I am very happy to do my work with full happiness, full intensity. I can do my actions very easily, and जो भी whatever I wish, I can do it very swiftly, easily, creatively, and actively. Keep the coin now on your solar plexus. I'm opening up the doors for money manifestation with the help of this coin. I can just I'm getting new people in my life, new ways, new social circle, and I'm able to communicate with new people and easily मैं अपने थॉट, फीलिंग और सभी चीजों को व्यक्त कर सकती हूँ. I can just make them understand my feelings, and I can just proceed the work through my solar plexus chakra with the help of solar plexus chakra, and my work is getting done easily. Now we'll keep the coin on the sacral chakra. I'm opening up my sacral chakra immediately with the help of this coin, and I can take immediate action, I give importance to my work, and my work is getting done very swiftly, very easily, and I am just leaving my laziness and doing actions immediately. I'm taking actions immediately. I'm able to manifest anything and easily now because of all my chakras are open. Now we'll keep this coin on our root chakra. I open up my root chakra, and I'm ready to do any work easily. I'm motivated. I'm totally eager to do anything. I can just do anything easily. मेरे अंदर से सारी इच्छा शक्ति पूरी whole body से आ रही है, and I can do
each and everything very swiftly, very easily, with high intensity and speed. This coin is now ready with Ichha Shakti, Kriya Shakti, and Gyan Shakti. Ma Kali, Ma Saraswati, and Mahalakshmi all are now on this coin. We'll just do the final programming by keeping this on our third eye chakra. We'll just give this coin command that whenever we get this coin in our hand, all our 7 chakras are activated and balanced. We'll get we are ready for the infinite abundance, infinite consciousness, and all our chakras are activated. Whenever I speak to any customer, any new person, I can manifest money easily, and my work is done with the help of all 5 elements. I thank universe, I thank supreme consciousness, and I thank all the 5 elements: Agni, Jal, Vayu, Prithvi, Akash, every element, and I can manifest anything with the help of these 5 elements. Thank you, thank you, thank you. You can just keep this coin in a very safe place, and आगे 7 days अगर आप लोग ये coin को charge करेंगे और फ्लावर से negativity निकालेंगे, so it will help you in balancing your chakras immediately. It is tried and tested. You can open up your eyes. Ma'am, with the same flower? No, you have to take different flowers every day. This New one we have flower. to throw, na? And yes, this flower we have to throw, but the coin has to be kept in your wallet or in a safe place. सेम कॉइन से And you करना है can मैम? say, हाँ जी, सेम कॉइन से करना है, क्योंकि वो कॉइन हमें बैलेंस रखेगा. तो इसी कॉइन को हमें चार्ज करना है 7 days, और 21 days अगर हम चार्ज करेंगे तो इट इज वर्किंग लाइक अ रॉकेट. तो फिर कहाँ रखना है मैम? अपने इसमें सेफ प्लेस में रख के और उसको कर सकते हैं? देखिए, सेफ प्लेस में यानी वो कॉइन किसी और कॉइन के साथ मिक्स नहीं हो. हाँ, वो इसलिए वो ना कि अलग आपके- से इसको कुछ. हाँ जी. तो और मैम अगर आपका कोई फ्लावर को कहाँ थ्रो करना है? फ्लावर को आप डस्टबिन में भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, बाहर विंडो से भी फेंक सकते हैं. ओके, बाहर बट इट विंडो हैज से टू बी थ्रोन आउट. नहीं, थैंक यू मैम. आई एम सॉरी, मैंने हिंदी में प्रिपेयर किया था तो मुझे इंग्लिश में अचानक से नहीं, ठीक है मैम. मेरा कॉइन तो बहुत गर्म हो गया था. यस, बहुत गर्म. आपकी एनर्जी ज्यादा होती है तो फिर वो गर्म हो जाता है. तो ये और मैंने इवन फ्लावर से भी जब कर रही थी तो ऐसे सब वहां से लग रहा था हीट आ रही है, निकल रही है सभी चक्रों से, उस तो फ्लावर में जा रही है. आपने रिलीज किया है ना मैम? बिल्कुल. मेरे को ये फर्स्ट टाइम ऐसे फीलिंग हुआ है जब कर रही हूँ तो. ओके, नो, धीरे धीरे हो रहा है. दिस वर्क्स वेरी वेल. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच माधुरी जी. वेलकम मैम, थैंक यू. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. क्यूट मैम. माधुरी जी, इस पे कोई निशान लगा के रख सकते हैं क्या हम लोग, जैसे इसमें मार्कर से? मैम, आप उस पे श्रेम लिख सकते हो. श्रीम लिख के उसको रख सकते हैं ताकि वो मिक्स ना हो सब में और उसमें पता चल जाए. यस मैम. थैंक यू मैम, थैंक यू. बीइंग अ नॉन हीलर, जब मैंने पूरी मॉडलिटी नहीं सीखी थी तो आई वाज डूइंग दिस एंड इट वर्क
very well for me, and I used to do doodling also. तो doodling तो अभी सर ने आपको बताया है कि क्या है सर मैम? डूडलिंग क्या है? जो आप लोग क्लाउड रेन ड्रॉप सब बनाते हैं वो अच्छा, वो जो वो पेपर पे बनाते हैं जो। जी। ओके। So I do personalized healing with doodle and all that. ओके मैम। If you want to make yourself strong, you can draw an elephant daily. मैम क्रैक हो रही थी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी। आप लोगों को अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और एलिफेंट के जैसे मस्ती में रहना है तो you can all draw elephant. So Okay. you will be getting strength and wisdom like elephant. एलिफेंट के शरीर को नहीं देखना है. You don't have to see that it's a huge animal, but it is a strong animal. Nobody can stand in front of an elephant. Yeah. So, Yes ma'am. and it has big ears, so we develop hearing capacity with that. Otherwise, we only talk and we don't hear others. So there are many benefits of drawing an elephant. Okay. Anything else? What is the time for doing this? You can do any time, ma'am, as per your convenience. Because agar I feel that if I am not in a mood to do any evening, whatever time, मेरा मन नहीं है, then I'm not doing justice to myself. So you should be very flexible. Whenever you wish, you do it with whole heart. मैम ये 21 डेज तक करके हम दूसरा कॉइन भी कुछ कर सकते हैं इसको या? No, when you get money, you can make it a silver coin, gold coin. ऐसे करके you can just turn it. हाँ, मैं अगर पहले पता होता तो एक सिल्वर कॉइन ही रखते मैम आज। कोई बात नहीं, नहीं, आप नवरात्रि से स्टार्ट कर सकते हो सिल्वर कॉइन से करना. So it is the best time to manifest and program. ओके मैम ये कॉइन का बाद में क्या करना है? वॉलेट वगैरह आपको अपने वॉलेट में या किसी सेफ प्लेस में रखना है. Whenever you go for a job or your business clients को मिलना है, that time you can just take the coin in your hand and feel that all your chakras are balanced and your work is done easily. It become little bit heavier. Coin had become little bit heavier, Yeah, ma'am. because energies are there, so your energies are high, so it represents your energies. And when you need to balance your energies, it will help you. Thank you. Welcome. What to draw to attract clients? Yes, ma'am. What to draw to attract clients? You can draw number of people sitting and come. You're having a parlor, no? Right? Yeah. Reiki is healing. So you can. It's I do Reiki facial and Reiki spa over there and other healing modes. Okay, so you can make number of people sitting for your healing session and waiting in a queue. That will also give you number of clients. So we have to do it for 21 days or more than that? For clients, you don't have to draw daily. You can draw once and keep it. Okay. See, the thing with doodle is like you don't have to draw every doodle daily. Only for money we draw 21 days. भैया खुला हुआ है?
दर्शन के लिए हेलो, Thank एनी you अदर so much. हाँ क्वेश्चन? ठीक है हाँ कोई दिक्कत नहीं वेलकम। Rohit, your voice is coming very much. Hi, this is Ganesh here. I'm sorry, I'm traveling. Hi. Hi. So I'm just on the mobile phone. so sorry Yeah, so my sorry. bad Yeah. Yeah, okay, it's getting. Yeah. Any other doubts for anyone? We are discussing that only. We are discussing doubts only with the ma'am. Yeah, sure. Okay, sure. Yeah, so please mute yourself. मैम ये एलिफेंट किसके लिए बताया था आपने? Elephant, if you want to be strong in life. Elephant की qualities क्या है? या राजा, okay. And elephant का wisdom अच्छा है, elephant की ears big है, so an elephant always prefers to hear and then do whatever he wants. यानी सुनना सबका, करना अपने मन का. So follow elephant. And elephant के आगे कोई नहीं रह सकता है. Stability is there by drawing the. So we draw once and we can we put it in the room? Yes, you place it room and you can visualize it daily in the morning and at night before sleeping. या एलिफेंट को विजुअलाइज करना है. वो जो पिक्चर आपने बनाया है उसको आपको देखना है. Just concentrate on that picture and feel that you are like an elephant and you have strength, you have wisdom, you have stability. So this is the thing. Now being a lady, you are a queen because Voice is not coming, I think. जैसे एलिफेंट को आपने राजा कहा तो हम लोग हमारे मन में रानी भी बनेंगे ना. We are अच्छा. Male and female elephant. Yes, no, but elephant is elephant. Elephant is elephant. Qualities are the same. तो रानी को में क्या बनाएंगे फिर? अरे रानी में हमारी femininity, you should enjoy that. Okay. Dancing doll. Dancing girl. Any other thing you want to know for doodle or something like? You say by your मैम डूडल में अगर आप कोई एक ma'am. पिक्चर बना के हमारे को भेज दो जिसमें हमारे रिलेशनशिप फाइनेंशियल हो जाए तो आप एक Ma'am, each one has a different perspective. उनका different problem होता है. So I prefer to do personalized doodling. Okay. Because I cannot give same advice to any other person. 7 चक्रास के लिए भी अलग अलग ही होगा. 7 चक्रास सर ने आपको voice breaking. Voice is breaking, ma'am here. के साथ दे दिया है. Hello. Ma'am, voice is breaking. आपकी आवाज See the tree given you Wi-Fi. 1 second. नहीं आवाज कट रही है. अभी आवाज आ रही है? हाँ अब आई है. वो वाईफाई चेंज कर दिया, स्विच ओवर कर दिया. अब बताइए मैम दोबारा 7 चक्रास के लिए क्या बता रहे थे? 7 chakras, sir has given you all a tree to draw with red color roots and yellow and orange color bark, I suppose, and green color का उसका bush है. Then sky is there. So वो सर ने उसमें सीनरी में हाँ वो डाला हुआ है. अच्छा वो 7 चक्रास. We had decided that for 7 chakras. So okay.
जनरल आप लोगों को दे दिया है। हाँ जी, हाँ जी। जनरल में मैम बच्चों को पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन के लिए दे दीजिए ना। अभी ऑनलाइन चल रहा है तो कोई बैठ के पढ़ता ही नहीं है। बेचारे बच्चे, you know, child Everyone has the same. cannot sit for so much time, you know. So I think you should give your child some exercise. कि अगर वो थोड़ी देर 5 मिनट भी, if you all give them a break and ask them to do something like jumping or some other exercise, some other activity, they will study well. Because I am a teacher and I have 30 years experience in teaching small kids. I am a playgroup. I had a playgroup and nursery. हाँ मैम, पूरा दिन वो डांस ही करती रहती है। And you can write study care. Switch word लिख सकते हैं, study care. Study care. 555555. This switch word helps a lot. And ask them to draw a circle. जो spiral होता है ना, अभिमन्यु का चक्रव्यूह देखा है? So that spiral can be drawn for concentration, but inwards, outside नहीं. छोटा सर्कल बना के फिर बाहर 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 नहीं, big circle to in, so that will improve the concentration. जितना उन लोग फाइन बनाएंगे उतना ये अच्छा. तो So बड़े you लोगों all का भी can sit काम देते together. हैं. That works for the elder people. Yes, that's what I am going to say. You can just all sit together and make circle like this for 2 minutes or 3 minutes. उससे ज़्यादा बच्चे कर नहीं सकते हैं. They need other activities also. So किसका सबसे अच्छा बना है? You can make a competition sort of thing. कभी कुछ गेम्स खेला, कभी कैंडल्स पे विजुअलाइजेशन के लिए दे दिया उनको कि कौन कितनी देर उस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है. स्मॉल थिंग्स विच improves concentration, eyesight. You can play ball, sit in a circle and throw the ball to anyone. तो उसमें भी उनका concentration बढ़ेगा. And स्मॉल ग्रेन्स को, अगर छोटे बच्चे हैं तो स्मॉल ग्रेन्स उठाकर एक इसमें से दूसरे इसमें डाला, that will also improve concentration. Other thing is with graphology we can do many things. So it is a very deep thing. Any other question? No ma'am, thank you so much. Madam, what is the difference between doodle and metaphor analysis? Ma'am, I have not gone through this metaphor analysis. I'll just go do the research and let you know. Okay, thank you. Okay. We'll take this question online. I'll tell you by tomorrow what's the difference between a metaphor and this thing. This is Ganesh here. I'm traveling actually. I'll tell you tomorrow. Who was it? Sarita Gupta, right? Sarita Gore. Yeah, ma'am, I'll tell you by tomorrow. Sure. For a 3-year-old child, we can't expect the child to sit at one place and do all the things. So you have to give activities in every half an hour or 15 minutes and give some incentive. Ma'am, anything for mobile addiction in Incentive young generation? should be like not, see now you can't help because all the classes and everything is there on laptop and phone, everything. So how can you do this? No, madam, it's go beyond young generation, not for the child. Continuously, they used to 24 hours, they have this mobile. Ma'am, you can draw a doodle and put a affirmation that your child is now away from the mobile and doing some creative thing, whatever you wish. Okay. Hello. Yes. Hello. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. I'm leaving now, please. Excuse me. Okay.
माधुरी मैम, एक Yes. क्वेश्चन और था कि अगर हमने अपने बच्चों के लिए जैसे कॉइन अगर उसको चार्ज करके देना तो उसको कैसे करें? नो, ये सेल्फ एनर्जी है। अच्छा, और किसी को नहीं दे सकते आप? नहीं नहीं, ये सेल्फ एनर्जी है, उनको उनका चार्ज करने दो, क्योंकि हम हमारी एनर्जीज को एक्टिवेट कर रहे हैं, किसी और की नहीं। ओके ओके, मैं इसलिए वो जानना चाह रही थी कि हम चार्ज करके उनको दे सकते हैं, नहीं दे सकते। नो मैम। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। हेलो हेलो। यस यस मैम। हाँ मैम, Yes, एक ma'am. सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ये Yes. कॉइन है, इसको कैसे चार्ज करेंगे अपने लिए? मैम, अभी जैसे हमने किया, यू हैव टू से योर ओन अफर्मेशंस कि आपको क्या मैम थोड़ा चाहिए, एंड हिंदी देन में बोलिए मैम। ओके, जो आपको चाहिए चक्र पे कि आपको क्या चाहिए, वो आप अपने खुद के पॉजिटिव ये बना सकते हैं अफर्मेशन। अच्छा, यानी उसको हाथ में रख के कॉइन को हर हेलो एक चक्र पे रख के ओपन करने को कहना है कि मेरा ये चक्र ओपन हो जाए और मुझे ये चीज इससे हो रही है। जैसे क्राउन चक्र से मुझे काफी लाइट मिल रही है, मुझे नए आइडियाज आ रहे हैं, मेरा काम खुल रहा है। ऐसे आपको हर एक चक्र का प्रॉपर्टी तो पता है, तो उसको अपने चक्र पे रख के वो अफर्मेशन बोलना है। वो कितना दिन तक करना होगा मैम? 7 दिन मिनिमम और 21 डेज मैक्सिमम। उसके बाद आपको करना है तो आप कर सकते हैं, बट उसमें चार्ज हो जाता है। और नवरात्रि जो है वो बेस्ट टाइम है ये सब मैनिफेस्टेशन के लिए। तो आप फ्राइडे से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, 7th से। ठीक है, आपको 21 डेज में सही करना पड़ेगा, दशहरे पे आपका चार्ज हो जाएगा कॉइन। We can do the gold coin also. You said. Yes ma'am. थैंक यू मैम। Welcome. Madam, can we recharge any crystal instead of coin? Ma'am, it's up to you if you can carry it. Okay. Coin is money energy, so. Okay. For money, we can keep the coin, but for some other thing, for relationship Yes, issue ma'am. or for something different types of issue, can we do crystal? Yes, ma'am. Surely you can take that appropriate crystal which Okay. is related to that issue. Okay. For weight loss, particularly, I am asking, ma'am. Weight loss. So for weight loss also you can command the crystal कि मुझे वो ideas आए how to control my weight and all that. You can give your command. Ma'am, Yes. I'm running online clothing store, ma'am. How to attract clients and as well as money? Ma'am, with the doodle you can do it. You can draw clouds and you can just write that clients are buying this stuff, whatever you have. Clouds, ma'am, clouds. Clouds, and you can draw what rupees or bundles of rupees from that raindrop. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. हेलो मैम। Yes. मैम, ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या एक्चुअली सेम मेडिटेशन करने के लिए? Yeah, hi, this is Ganesh here. आपको provide करेंगे। सब recording आपको YouTube में मिल जाएगी. I normally put this. Just get in touch with me. My number is 9. आपको शायद मेरा नंबर भी रहेगा. ANT Occult Science करके YouTube में जाइए, सब recording आ रही है. ओके, थैंक यू। एक्चुअली मेडिटेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू मैम। 21 days का recording भी है. आपका शुभ नाम मैडम? मेरा सोनल जैन। You can get in touch with me. You have my number. Okay, जिस ग्रुप से आप आए हो उधर मैं एडमिन हूं. सर आपके नंबर है मेरे पास। ओके
Done. Okay. Yeah, you can get in touch with me or Kunal. ओके थैंक यू एंड मैम का कोई पर्सनली यूट्यूब चैनल है या कुछ जैसे मैडम ने और इतनी अच्छी रेमेडीज बताई हैं तो वैसा कुछ और मिल सकता है कुछ यूट्यूब चैनल है मैम? You can get in touch with me or Ganesh sir. He will help you. ओके थैंक यू. Welcome. Thanks, ma'am. Suraj. Any other doubts? Can we close the session today? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, Thanks a Madhuri lot. ji. Thank you, everyone. At 8:30 tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.